Hello everyone, welcome to the day 7 of the 30 days CodeForces series. If you are still have not followed the series, then what are you waiting for? Link is in the description. Go and follow the series. Today we will be taking the problem Say No to Palindromes. It is a like a 1600 level problem. It's a DP problem. So we will be solving this problem today. So without any further ado, let's start the video. So if you haven't read the question, take your time and read the problem. The problem link is given in the description. And once you are done with reading the problem, then we will start with the explanation. Okay. So if you have already read the problem, so basically question में क्या बोला है? You have to make the string a non-palindrome. A non-palindrome means, see, suppose there is a string given to you, sorry, I guess caps lock in on BACB. So you can see here that this string is having a palindrome of size 2, which is a comma a. So it's not allowed. You are supposed to make such strings which is not having a palindrome of size 2 or greater, because the size of string of size 1 is always a palindrome. So you are supposed to make a string which is having a palindrome of size, which is not having a palindrome of size 2 or more. और ये सिर्फ आपको एक स्ट्रिंग के साथ नहीं करना है, you have to do it with the queries. Like first query में क्या है कि 1 से 3 में you have to make a string which should not have a palindrome. So you can what you can do here, you can write here C, and also इस string में तीन ही characters होने वाले हैं, A, B and C. So BAC it is a string, so you need to make one changes for that. So इसका आंसर 1 होगा. Then 1 और 5 में 1 to 5 means entire string. So entire string को अगर non palindromic बनाना है, so maybe we can write what we can write here. Maybe we cannot write B here because it will again become a palindrome. We have to write C here. But if we will write C here, it will become a palindrome. So we can again write, we cannot write A here because, so we will write B. And if we will write B, then we have to make it again A. So let's see whether the answer is 3 or not. No, it's 2. So basically there might be another possibility. But basically this was one of the possibility where you can see we have changed 3 characters and we have got an answer. But the answer is possible in 2 steps as well. So let's try to figure out that possibility. So maybe we can make it as C, or okay, what we can do is we can make it as C and we can make it as B. So now you can see there is no substring which is having a palindrome of 2 or more. So yeah, again then 4 comma 5, 4 comma 5 is already a non-palindrome, so we will print 0. 2 comma 3, 2 comma 3 is a palindrome, so we will make a change of maybe make the first A as B or the second A as B. So answer will be 1. So this was the question. Now अभी जो constraints है उसके हिसाब से क्या कि queries भी 10 to the power 5 तक हो सकती है और n भी 10 to the power 5 हो सकता है. So for each query, you cannot perform it in O of n. So you have to perform it in O of log n. But हम इसको O of log n में भी नहीं करेंगे. We will pre-compute the answer and we will perform it O of 1. How? Let's see. So suppose let's take the example. We may need to make strings which are not having palindrome, right? So just think of it कि कोई string अगर 2 बार repeat हो A B A B A B A B A B something like that, ठीक है? नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ए बी 2 बार आई थी, एंड अगर ये दो बार रिपीट हो रही है तो क्या ये कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि ये नॉन पैलिंड्रोम होगा? नहीं, बिकॉज इट विल ऑलवेज हैव अ पैलिंड्रोम ऑफ साइज 3, राइट? और अगर कोई एक ही कैरेक्टर रिपीट हो रहा है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है. लाइक इफ वी गो हियर एंड इफ वी से कि यार एक ही कैरेक्टर रिपीट हो रहा है ए ए ए, तब तो वो पैलिंड्रोमिक होगा ही नहीं. अगर मैं 2 की साइज लूंगा तो भी नहीं होगा. अगर मैं 3 की साइज लेता हूँ, try any possibility, maybe try this thing or try anything, so you will find कि यार कोई ना कोई ये मिल ही जाएगा. Try any possibility, like let's try something else. You might say B C A something, try like this, still it is having a palindrome of size 3. You might say okay, try something like this, it is a palindrome of size 5. You can do anything. आपको जो भी कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो किसी ना किसी साइज का पैलिंड्रोम होगा ही, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस. व्हाट आर दोस केसेस, हम वही डिस्कस करने वाले हैं.
So think of this case, look at this case carefully. ABC, then again ABC. ABC, then again ABC. Now इस string में you won't find any palindrome of any size. One size का कोई है क्या? One size का तो obviously होगा. Two size का कोई है क्या? नहीं, नहीं, नहीं. You can see no palindrome is there of size 2. Similarly, no palindrome is there of size 3 and so on. Is string में is there some another string? Yes. The permutation of this BCA repeated repeatedly. If it is BCA, then there is no combination. Again ACB, 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 and so on. Any other combination? BAC, 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 BAC. Any other CBA, 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 CBA. Any other CAB, 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 and CB. So basically, these are the six string, which is just the permutation of the first one, which will give you an answer of what? Non-palindromic answer. Otherwise, every other possible string will give you an answer which will be palindromic. So our task is to make this string equal to any of this particular string, the first five characters of any of this particular string. So how we will do that? So see here carefully. It's B, right? So what we can do is we can compare it with this. So B and A are they same? No. So if you want to make it equal to the this string, how many cases will be required? One will be required here. Then on the second one, it is not same. So two. Third is also not same. So three. Fourth is also not. Fourth is same. A and A are same. So it will be three only here. Up to here three only. To make this string equal to this string, we can see three steps are required, right? Similarly, if we want to make it equal to next thing, which will be this one, let's see how many steps will be required to make it equal to this one. So BCA, you can see the first three characters are already same, so we don't need to make any changes. And the next one is B, which is not equal to, so one step will be required. And the next one is C, which is again not equal, so two steps will be required. So if you want to convert it to this string, so it will have only two steps. Similarly, you can check for every string and we will find out that the minimum answer we will be getting from some particular string. This is giving an answer of 2, this is giving an answer of 3, and so on. And as we have seen, the answer minimum answer is 2, so we can convert it to this string, or earlier I guess we have converted it to this one. So yeah, basically you can convert it into any string to get the minimum answer. Any of one of the above string two. Not any, like one of the string will give you the minimum answer, one or maybe more than one. So हम क्या करेंगे? हम ना एक प्रीफिक्स array स्टोर करके रखेंगे कि यार यहाँ तक के स्ट्रिंग को व्हाट वी विल स्टोर इन प्रीफिक्स आंसर कि यहाँ तक के स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, फिर यहाँ तक के स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे. सिमिलरली ऐसे पूरे में हम लोग स्टोर करके रखेंगे. सिमिलरली फिर हम स्ट्रिंग के लिए भी वैसा एक स्टोर करके रखेंगे, स्ट्रिंग के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी और स्ट्रिंग के लिए भी. तो बेसिकली हमें 6 स्ट्रिंग्स के लिए स्टोर करना है. तो हमारा जो डीपी बनेगा इट विल बी ऑफ द साइज 6, n, वेयर n इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग. तो ये क्लियर है सबको? अगर आपको डीपी नहीं आता तो फर्स्ट थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स वगैरह यू कैन गो थ्रू एंड या तो आर्टिकल्स वगैरह रीड कर लो. मोस्टली ज्यादा लॉजिक नहीं है. बेसिकली हम क्या करने वाले, बस जस्ट हम स्टोर करके रखने वाले कि यार यहाँ तक के स्ट्रिंग को हमें नॉन पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, फिर यहाँ तक की स्ट्रिंग को नॉन पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे. फिर सपोज हमें जो क्वेरीज पूछ रही है, समवन आस्क्ड अस, हे टेल मी कि यहाँ से यहाँ में कितने लगेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक के जितने लग रहे थे माइनस इसके पीछे वाला जितना लगने वाला है उतना आंसर होगा, हाँ या ना. और वैसे ही 6 के लिए निकालेंगे और 6 में से जो मिनिमम देगा वही हमारा आंसर होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली व्हाट वी विल डू, सेम टू प्रीफिक्स सम, हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे. एंड प्रीफिक्स सम में हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमें इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक का मांगा है तो इस इंडेक्स तक को करने में जितना लग रहा है माइनस इसके पिछले इंडेक्स करने में जितना लग रहा था उसका, उसमें ये 6 में से जिसमें बनाने में मिनिमम लगेगा हम वो आंसर ले लेंगे. अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स टेक ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड समझते हैं. ये एग्जांपल है, इट्स BAA CBO के. तो ये जो एग्जांपल है, लेट्स ट्राई फॉर एवरी स्ट्रिंग ABC. तो यहाँ पे A से इक्वल है क्या, नहीं, तो एक स्टेप. ये A से इक्वल है, B से इक्वल है क्या, नहीं, तो 2 स्टेप. ये C से इक्वल है क्या, नहीं, तो 3 स्टेप. अगेन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो फिर से
स्ट्रिंग खत्म होके मॉड ऑफ 3 लेंगे हम लोग, क्योंकि स्ट्रिंग का साइज 3 ही है और यही बार बार रिपीट होने वाली है। सो सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 4 स्टेप। देन द नेक्स्ट वन, बी, बी के इक्वल है क्या? हाँ, तो इट विल बी 4 ओनली। नाउ ए सी बी, ए बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 1 स्टेप। सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 2 स्टेप। बी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 3 स्टेप्स। सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 4 स्टेप्स। एंड बी सी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 5 स्टेप्स। सिमिलरली बी ए सी, बी ए के इक्वल है क्या? 0 स्टेप्स। ए के इक्वल है क्या? हाँ, तो 0 स्टेप्स। फिर सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 1 स्टेप। नेक्स्ट सी बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 2 स्टेप। देन ए बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 3 स्टेप्स। नाउ बी सी ए, बी के इक्वल है क्या? हाँ, तो 0 स्टेप। सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 1 स्टेप। नाउ ए के इक्वल है क्या? हाँ, तो 1 स्टेप। सी बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 2 स्टेप्स। बी सी के इक्वल है क्या? नहीं, सो 3 स्टेप्स। सिमिलरली सी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 1 स्टेप। सी ए के इक्वल है क्या? हाँ, तो 1 ही स्टेप रह जाएगा। ए बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 2 स्टेप्स। देन अगेन सी के इक्वल है क्या? हाँ, तो 2 ही स्टेप्स रह जाएंगे। फिर बी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो फिर 3 स्टेप्स। नाउ सी बी ए, सो सी बी ए, सी बी के इक्वल है क्या? नहीं, तो 1 स्टेप। बी ए के इक्वल है क्या? नहीं, तो 2 स्टेप्स। ए के इक्वल है क्या? हाँ, तो 2 स्टेप्स। फिर सी के इक्वल है क्या? हाँ, तो 2 स्टेप्स। एंड बी के इक्वल है क्या? हाँ, तो 2 स्टेप्स। सो एज वी हैव सीन कि ये जो स्ट्रिंग थी इसको कन्वर्ट कर रहे थे जब हम लोग सीबीए में, तो हमें 2 स्टेप्स लग रहे थे, विच वी कैन सी फ्रॉम द आंसर। 2 माइनस इसके पिछला यानी 0, तो 2 माइनस 0 2 स्टेप्स लगेंगे। अगर हम लोग ये वाला चेक करेंगे तो 3 माइनस 0 3 स्टेप्स लगेंगे। इसके हिसाब से 2 स्टेप्स, इसके हिसाब से 3 स्टेप्स, इसके हिसाब से 3 स्टेप्स, इसके हिसाब से 3 स्टेप्स, इसके हिसाब से 5 स्टेप्स और इसके हिसाब से 4 स्टेप्स। So this was the answer. Now let's try for other strings, मतलब other substrings. So 1 से 3. So what we will do, 1 से 3, 1 से 3 में चेक करो। 1 से 3 मतलब 3 minus 0, 3 minus 0 is 3, 3 minus 0 is 3, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1, 2 minus 0 is 2 and 2 minus 0 is 2. So we can see the minimum answer is 1. So let's see क्या minimum answer 1 है। तो हाँ, मिनिमम आंसर इज 1। नाउ लेट्स 1 to 5 हम ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। 4 to 5, 4 to 5 वी विल चेक। सो 4 to 5, 4 to 5 में हम चेक करेंगे तो 4 माइनस सॉरी 5 माइनस 4 का प्रीवियस इंडेक्स जो 3, तो 1। देन वी विल चेक हियर, तो 5 माइनस 4 का प्रीवियस इंडेक्स which was 3, so 2. Now here 3 minus 1 which is 2, 3 minus 1 which is 2, 3 minus 2 which is 1, and then 2 minus 2 which is 0. So we can see the minimum answer we are getting is 0. So हाँ, 0 is the answer. Then 2 to 3 similarly you can try. So basically हमारा काम सिर्फ ये है कि we have to build this grid or this dp array or dp2d array, dp grid, whatever you want to say. So इसको जो build करने का काम है, it is very easy. We can simply take a vector of strings which will have the permutations of ABC, and then we can just traverse through 1 to 6, and for each we will just check whether the s of I is equal to s of I mod 3. If yes, then we will increase from, if we won't increase from previous, we will simply take previous. If not, then we will increase one value from the previous value. मतलब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वल नहीं थी बी एंड ए, तो हमने पीछे वाली वैल्यू मतलब 0 से 1 इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली ए और बी इक्वल नहीं था, तो हमने पीछे वाली वैल्यू मतलब 1 से 1 इंक्रीज कर दिया। बट इन सम केस लाइक हियर बी मतलब 5 एंड 5 mod 2 which is 5 mod 3 which is 2, ये दोनों इक्वल है। सो सिंस दे वर इक्वल, तो 4 पिछली वैल्यू 4 थी तो हमने नेक्स्ट वैल्यू भी 4 ही रखी। सो दिस इज हाउ वी विल मेक द डीपी एरे। एंड उसके बाद तो क्वेरीज आंसर करना बहुत सिंपल है। मतलब नाउ अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो लेट्स जस्ट एड्रेस योर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन बोल रहा था कि यू हैव टू फाइंड, यू विल बी गिवन क्वेरीज for the substring and you have to make the substring no palindromic. No palindromic मतलब वहाँ उस string में कोई भी ऐसी substring नहीं होनी चाहिए जो 2 या 2 से बड़ी साइज की और palindromic हो। वन साइज की string palindromic होती है, इसलिए वन साइज की हमने कंसिडर नहीं की है। नाउ आफ्टर कंसिडरिंग दिस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आंसर फ्यू क्वेरीज। तो और ये जो क्वेरीज आंसर करनी है ये ऑफ लॉग इन में करनी है, तो हमने इसको ऑफ 1 में आंसर किया, बट यू हैव टू आंसर इट मैक्सिमम ऑफ ओ ऑफ लॉग इन, बिकॉज m क्वेरीज होंगी, तो एवरी क्वेरी यू हैव विल हैव द टाइम ऑफ लॉग इन ओनली। तो हमने सबसे पहले जो लॉजिक देखा वो क्या, कि हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेना उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई साइज का ये आ ही जा रहा है पैलिंड्रोमिक।
ओनली हमें क्या पता चला कि सिर्फ ये जो स्ट्रिंग्स है, यही ऐसी स्ट्रिंग्स है जो कि पैलिंड्रोमिक नहीं आती है, कभी नहीं आएगी अगर हम इन्हीं स्ट्रिंग्स को रिपीट करें। तो अदरवाइज हम कोई भी स्ट्रिंग लेंगे, उसमें अगर हम कोई भी रैंडमली स्ट्रिंग लेंगे, उसमें दो या दो से ज्यादा साइज की पैलिंड्रोमिक आ ही जाएगी। सो तो बेसिकली हमें समझ में आया कि हमें ये 6 स्ट्रिंग से कंपेयर करके देखना है इस स्ट्रिंग को, और जो भी मिनिमम आंसर देगा उसको हमें कंसिडर करना है। उस कंपैरिजन के लिए हमने ये डीपी array बनाया। कैसे बनाया, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो गो एंड रीवॉच द वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। टेक योर टाइम, ड्राई रन करके देखो, खुद से पेन पेपर पे ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता है देन वी विल ट्राई टू मे बी राइट डाउन इन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन अगर स्टिल नहीं समझ में आया हो तो। एंड yeah, so this was about the problem. Now I will show you the code. If this code submission link is given in the description, so go and check out there as well. I will be showing the code in CPP. You can try the same in Java as well. So let's start with the code. सी मैंने बहुत सिंपली एक डीपी array बनाया है ऑफ साइज 6 और n, जैसा मैंने कहा। देन पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो ए बी सी, बी ए सी ए बी, ए सी बी एंड बी सी ए एंड सी बी ए। तो मैंने इनको वेक्टर ऑफ वेक्टर में डाल दिया। यू कैन मेक अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एज वेल। आई गेस आई शुड हैव मेड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बट दैट्स फाइन। नाउ व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली मैंने 6 कॉम्बिनेशंस के लिए चेक किया कि n तक गया, एंड आई चेक जैसा मैंने कहा कि j पॉसिबिलिटी ऑफ j is not equal to j modulo 3 not equal to s of j then current plus plus and dp of ij equal to current। so basically वही प्रीवियस वैल्यू को लेके हमने इस वैल्यू में स्टोर कर दिया। सो यही था, मतलब प्रीफिक्स सम बेसिकली हमने कैलकुलेट किया है। आई डोंट थिंक इट इज वेरी हार्ड बट आई हैव डन टू अंडरस्टैंड। बेसिकली प्रीफिक्स सम में पहले करंट जीरो था, फिर तो ये करंट बेसिकली प्रीवियस वाली वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो जब कुछ भी नहीं था तो वो जीरो था, तो अगर सेम नहीं था तो हमने उसको वन बना दिया, वन स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम इसमें वन स्टोर है, तो जब वो फिर से आया, अगर उसमें फिर से सेम नहीं मिला तो उसे टू बना दिया और टू स्टोर कर दिया, और अगर सेम मिला तो वन ही रह गया वो, और वन स्टोर कर दिया हमने। अब क्वेरीज आंसर करने के लिए सबसे पहले क्वेरीज वन बेस में थी तो उसे जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट किया। आंसर सिंस हम लोग को मिनिमम निकालना है तो इंट मैक्स से इनिशियलाइज करके वी जस्ट चेक कि वही प्रीफिक्स हम जैसे कैलकुलेट करते हैं डीपी ऑफ जे कमा आर, और अगर वो एल नॉट इक्वल टू जीरो है तो डीपी ऑफ जे कॉमा एल माइनस वन, और आंसर में मिनिमम स्टोर कर दिया और आंसर प्रिंट कर दिया। सो कोड बहुत सिंपल है। इट वाज जस्ट अबाउट द लॉजिक। सो इफ यू have understood the logic, please hit the like button and put down in the comments कि यार हाँ मजा आया, समझ में आया कोड। और ऐसे ही awesome content के लिए चैनल को फॉलो करें। एंड the next problem link is again given in the description. Go and try to solve the problem. I will see you in the next one.